I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? Oh, she is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. सब गेमर्स यो बॉय अक्षय इज हियर और आप देख रहे हो अक्ष गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं शेरलॉक होम्स का द डेविल डॉटर गेम का वॉकथ्रू वीडियो। और कुछ बना था 2016 में, बहुत पहले से खेलना चाह रहा था गेम को बट कभी बाय नहीं कर पाया। तो फाइनली हमने गेम को बाय कर लिया है और अभी हम गेम को खेलने वाले हैं। खेलने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों की तरह मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ, तो जो कुछ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और गेम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है गेम के अंदर। तो जैसे आगे के जाएंगे सबको पता चलते ही जाएगा, मुझे भी और आपको भी। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा गेम की तरफ जाते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी के लिए होम्स को मिलने के लिए एक लड़का आया है जिसके बारे में हम अब जानना स्टार्ट करेंगे। Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. इसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गेम के बीच में इंटरप्शन नहीं होगा मेरी तरफ से, ताकि आप सब जो चीज़ें चल रही है गेम के अंदर वो ठीक से सुन पाए, देख पाए जो कुछ भी चल रहा है। जो कुछ भी हम बात करेंगे गेम के बारे में, अगर मेरे को कुछ आपको बताना है, समझाना है, तो वो चीज़ जब फ्री स्पेस आएगा गेम के बाद, जब वो हम दौड़ रहे होंगे या फिर कुछ चीज़ें करते रहेंगे, उस टाइम पे वो चीज़ें बातें करी जाएंगी। तो अभी के लिए इसका जो ये एक क्या चीज़ है उसको देखते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पे कुछ ये कैरेक्टर का पोर्ट्रेट हमें बिल्ड करना है हमारे बुक के अंदर बाय पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स एंड डिटरमाइनिंग देयर मीनिंग। ओके, तो रेड आइज का मतलब है रिसेंटली वीपिंग। और आगे बढ़ते हैं। स्किनी हैंड्स, इंजर्ड तो है नहीं, मैलफॉर्मेशन ही होगा। यस, मैप ऑफ लंदन, तो ही कैन रीड प्रॉपरली। केयरिंग पेरेंट्स है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है आपके हिसाब से, बाकी की चीज़ें वो खुद से सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ये नीडली नीडल या फिर मैल न्यूट्रिशन या फिर वो नीचे वाला जो उसने सिलेक्ट किया। तो वैलिडेट करते हैं। तो टॉम हमारे कैरेक्टर पोर्ट्रेट में आ चुका है, आगे देखते हैं। What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? Police, they don't believe me. They say he's just abandoned me.
but that's a lie. ऑब्वियस है ना, अगर पेरेंट्स अगर इसको ठीक से पढ़ाया है, इसके क्लोथ्स नीट एंड क्लीन है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पेरेंट्स है, तो वो इसको अबेंडन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं। What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job, but this time he was acting a bit strange and angry. Strange? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. तो ये है हमारा पहला केस, जिसमें हमें फाइंड करना है टॉम के फादर को जो मिसिंग है, और उसने अपना एड्रेस बताया है, तो हमें वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसके पहले रूम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। My analysis table. It's useful for my work. Brave Toby, the best nose in the British Empire. A map of London and its surroundings. Could be useful. My archive. I can always consult with it if needed. Watson documents our adventures in here. नाइस। तो ये है होम्स का बेडरूम। तो इसके अंदर हम क्लोथ चेंज कर सकते हैं। आई लाइक दिस। हेयर कट भी चेंज कर सकते हैं। कैप रखते हैं, ग्लासेस, यस, हेयर कट। Yes, I like this one. ये ओके, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और देखते हैं यहाँ पे बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये टॉम का पोर्ट्रेट है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। ये ओके, यहाँ पे एविडेंसेस जो कुछ भी हमें मिलेंगे वो स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे है टास्क जो हमें करना है, और ये है क्लिक। ओके, तो टाइम ट्रैवल जैसा कुछ है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको उस लोकेशन तक लेके चला जाएगा। चलते हैं टॉम के घर पे और देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद हमें क्या सारी चीज़ें देख। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नहीं मिलती है। These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. तो हम आए हैं नॉर्थ स्ट्रीट पे। North Street. नॉर्थ स्ट्रीट तो नहीं बोला था उसने, कुछ डी से स्टार्ट होता था ना। यस, एक बार इधर जगह चेक कर लेते हैं। ओके, ये है पब। ओके, इधर नहीं जाना है, इस साइड। ओके, नॉर्थ स्ट्रीट, रूम नंबर और या फिर डोर नंबर 12। ओके, गॉट इट। फर्स्ट फ्लोर पे जाके यहाँ से ई डोर।
यस ये वाला है। Tis a home, Mr. Holmes. Yeah, okay. Concentrate your attention on finding details that other are included to overlook. Okay, तो यहाँ पे कुछ टी दबाने से जो कुछ भी चीज़ें हमारी आइज़ को जल्दी से नहीं दिखती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। तो जैसे ये एक ओह ये तो नीचे जो पब था The उसी old के Tabard pub, North Street. Glue. Probably taken from a wall. के तो ये पब का ही कुछ तो है। George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. The roof leaks all the time. Father used to fix it. ओके तो ये शेरलॉक होम्स की एक मैगजीन है। Ah, so that's why you came to see me. Tom probably reads at night. अब अकेला बच्चा करेगा क्या? 3 वीक से घर पे अकेला है तो। Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. ऑब्वियस सी बात है ना। Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. So those are some bills. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. तो बाकी सब कुछ स्क्रॉल करके तो हो गया है। एक बार सीढ़ी का चढ़ के ट्राई करते हैं ऊपर जाके, अगर यहाँ पे कुछ है, अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। It's too dark. I can't see anything. ओके तो कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी जिससे ऊपर रोशनी हो और हम देख सके। तो ऐसा क्या है घर में जिससे रोशनी होगी? यहाँ पे कुछ है। ये ओके यस इसको यूज़ कर सकते हैं ना। यस राइट ये बॉक्स का कुछ Just some old things. ओके A leather satchel. What's in it? कुछ लेटर है जॉर्ज को लिखा है किसी ने। आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब एंड यू नीड टू फीड एंड क्लोथ योर सन सो आई हैव अटैच्ड अ लिटिल this letter a pub left. I have heard that there is a fellow who is offering a special job. Maybe it will help you. I hope so. So is it this? तो इसी चीज़ के बारे में टॉम बात कर रहा था जो स्पेशल जॉब ढूंढने के लिए उसके डैड गए थे। तो एक बार बात कर लेते हैं। The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father, Tom? My father's a regular, but he's not a drinker, sir. It's close by on North Street. ओके फाइंड आउट मोर अबाउट द स्पेशल जॉब। तो शायद से उसी के यहाँ पे जाना है अभी। यहाँ पे चीज़ें अपडेट होती रहती है, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या एविडेंस मिला है, आप बाद में उनको देख सकते हो। और यहाँ पे देखो अभी टॉम के घर का एक चेक पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो अगर मेरे को फिर कभी जाना है तो आई कैन गो टू हिज होम डायरेक्टली। तो हमने देखा ओह ये कौन? Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me. I just might be in need of your assistance later. Wait here. तो विगिंस किसी चीज़ में हेल्प करेगा, अभी के लिए नहीं बट बाद में। तो अभी पब में जाके चेक करते हैं वहाँ पे क्या चीज़ हमें ढूंढनी है। I need to Earwig to find out who is offering this special job. यहाँ पे कुछ दिखा रहा था, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ करना है। तो जैसे उसने कहा कि स्टार्टिंग में अंदर आने से बाद कि सुनना है पीपल क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, तो जिससे पता चलेगा कि जो पर्सन जॉब ऑफर कर रहा है
उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल सकती है। तो चलिए, ये क्या चीज़ है? No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. तो जो पर्सन जॉब ऑफर कर रहा है वो ड्रिंक नहीं करता है, बट पब में बैठ के जॉब ऑफर कर रहा है। स्ट्रेंज। The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Equality to the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो जिसकी विस्कस है और जो कभी पीता नहीं है, जो पब में बैठता है No बट पीता gods, है। no masters. यहाँ पे कुछ है? This must be the man that I'm looking for. तो यही वो पर्सन है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि जिसकी विस्कस है और जो पीता नहीं है बट यहाँ पे बैठा रहता है सबको जॉब ऑफर करते हुए। तो देखते हैं। तो कुछ लिखा था ना, बाद में देख लेते हैं उठा के उसको। Interesting. A missing person. I should find out more. जॉन स्ट्रोब्रिज एक मिसिंग पर्सन का नाम है। तो उसका जो पोस्टर लगा हुआ था वो पोस्टर उसने निकाल के फेंक दिया है। तो शायद से उसका पीछा करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना Child है। labour law sent your kids to... You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. ओके, तो जिस किसी को भी होम्स कुछ करने के लिए कहेगा तो शायद से वो सारी चीज़ें हम खुद ही करेंगे। तो इसका नाम है विगिंस और इससे कहा गया है, जो पर्सन अभी गया था जो जॉब ऑफर कर रहा है सबको, तो उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो छुप छुप के जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर फॉलो कर रहे हैं तो दिखना नहीं चाहिए उसे, नहीं तो फिर हम हार जाएंगे। Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. The little one's only 70. जैसे आपने अभी देखा, उसने हमें देख लिया था और अगर ज़्यादा डन में वहाँ पे रुकता तो हमें उतना सारा फिर से खेलना पड़ता। तो इट्स गुड कि आराम से खेले, कवर ले ले के खेले। cheap. Oh, नहीं, it's good.
मुझे won't लगा let me उसने मुझे pass. देख लिया. I'll need to find another way. Okay. Rich folk feed meat to their dogs. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. तो ये जो मार्क दिख रहा है ना एक्सक्लेमेशन का उसके सिर पे, तो दैट मीन्स कि अगर उसने हमें देख लिया Take a तो brush वो and get in there. एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. अगर What are you waiting for? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Stop crying and get to work. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. Stupid kid. Please, you don't have to beat him. I'll do it. I'll clean the chimney. Go on then. He's still here, that's a relief. तो वो चिमनी वाला सीन हमने स्किप कर दिया. इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं उसमें. बस तो उस साइड जाना है ख्याल से, और यस वो भी उधर ही जा रहा है. Oh my god. पेशेंस लगता है इस चीज़ के लिए. क्या बताऊँ, आसान नहीं है बट हो जाता है. वो किधर गया? ओह माय गॉड. खेल खेल में निकल गया क्या? और नहीं है बट आगे कैसे जाएं? नीचे यहाँ से. यहाँ पे कुछ ऐसा पकड़ने जैसा ऐसा कुछ चाहिए था ना कि जंप करके पकड़े तो मज़ा और ज़्यादा आ जाता था. बट ठीक है, अब क्या कर सकते. Get away from me, boy. मुझे लगा वो आगे निकल गया था. अब क्या बोलूं. इट्स ओके. आराम से चलते हैं. देख के फिर छुपन छुपाई में तो बचपन से ही है, बट इस वाले में उसको आहट ना भी मिली. Drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? सुबह सुबह लगा के बैठे साहब. प्रॉब्लम इतना ही है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे कहाँ छुपे हैं. कवर के लिए कुछ है ही नहीं. No place to hide here. We'd better go through the yard. ओके बॉय. Hi, what are you doing in my garden? कुछ नहीं आंटी जी, बस दूसरी तरफ जाना है. क्यों भाई साहब रुके क्यों हो? अब तो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ. ये कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस बन रहा है. अगर इतना कुछ है नहीं तो इतना डर के चलता नहीं था ना. देखते हैं आगे जाके पता चल जाएगा सारी चीज़ों के बारे में.
किसी घर में चला गया और यहाँ पे कुछ Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. क्या किट ले लिया आपने? Oh my god. ओके तो चलिए ट्राई करते हैं. Perfect. Here's your reward, you little toad. Thank you, sir. नहीं देखा यार. हाँ तो आप फिर बोलते देख लिया. Damn! I need to find another one. आराम से आराम से. Alas, the weather's बच्चे की good. जान लोगे Last क्या? week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for coal. ओके. अरे भाई साहब कहाँ चले? हमें भी तो लेके जाओ. I can't lose him now. ओके. यो बॉय. छोड़ना नहीं. तो विगिन्स उसका पीछा करते करते कोई स्ट्रीट पे पहुंचा तो वहाँ पे जाने के बाद वो किसी स्टोर में या फिर किसी घर में चला गया. उससे बाहर आके फिर हमने उसका शू पॉलिश किया और उसके बाद फिर अब हम उसके बग्गी या फिर कैब में चढ़ चुके हैं. अब देखते हैं वो कहाँ पे जाता है और फिर उसका पीछा करेंगे वहाँ तक. और वहाँ पे जाने के बाद कुछ चीज़ें को देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर आगे देखेंगे. Interesting. What's going on in the yard? और यार्ड में कैसे जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है बंद. ये तो क्लोज ही रहेगा. लॉक. यस लॉक. पीछे से यहाँ पे कुछ टूटा हुआ है. ट्राई करते हैं. गुड बॉय विगिन्स. बहुत होशियार हो. विंडो. ओके विंडो से झांक के देख सकते हैं. राइट. Do only 2 people live here? I wish one was me. ओके Bags of food. I like this house. ठीक है. और बाकी कुछ देखते हैं. अगर पीछे की तरफ जाके अगर कुछ जानकारी मिल रही है हमें. यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते. इसके लिए जल्दी जल्दी सब कुछ जो कुछ भी मिल रहा है उसकी जानकारी लेके हम निकल जाएंगे. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. और क्या है? Frames. Wow, a lot of expensive stuff. Okay. Is it Time done? to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Yes, boy. तो जल्दी से बाहर निकलते हैं और जाते हैं वापस होम्स के पास. तो ये सौदे सी बात है. जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाएंगे. तब होम्स के पास जाके सारी चीज़ों का रिपोर्ट दे के फिर होम्स डिसाइड करेंगे क्या करना है. Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? तो ये वो चीज़ है जो विगिन्स लेके आया. एक बार इसको देख लेते हैं. Wiggins did a good job. ओके एक बार चेक कर लेते हैं क्या लेके आया है विगिन्स. ड्राइंग ऑफ अ कोट आर्म. ओके सर्च आर्काइव्स. आर्काइव्स में जाके सर्च करना है. ओके एग्जामिन द ब्रॉड आइटम्स. तो एग्जामिन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे ये My analysis table. It's एनालिसिस useful for my टेबल. work. और यहाँ ओके तो ये है एक सिंबल्स और कुछ दिखे जा रहे हैं. तो न्यूज़पेपर के अंदर तो नहीं होता. रिसर्च के अंदर. ओके मार्क्स एंड सिंबल्स के अंदर ड्राइंग ऑफ कोट ऑफ आर्म्स. ओके ओके तो ये चीज़ है. लॉर्ड मार्श रेसिडेंट मतलब लॉर्ड मार्श की ये है.
जो लोगो है लगा हुआ तो लॉर्ड मार्च का है वो तो Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. ओके तो चलिए चलते हैं फिर लॉर्ड मार्श के घर पे Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? Maybe. We'll see. If you behave. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? तो कैटलिन या केट होम्स की बेटी है जो आई है वापस ओके तो चलते हैं मार्च के घर पे और वहाँ पे जाने के बाद पता लगाएंगे क्या सारी चीज़ें हो रही है Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. ओके तो जैसे सबने सुना ही है कि जो केटलिन है या फिर केट है होम्स की बेटी जो इसके पहले देखा था तो उसके डैड होम्स की वजह से उनकी जान गई थी तो जिसकी वजह से अभी केटलिन इसके साथ ही रहती है और ये चीज़ उसे पता नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं Come in, please. ओके Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. ऑब्वियस अनवेल स्लीप की वजह से इतने रेडेड नहीं होते हैं ना ओके सो इज एन फिजिशियन हंटिंग क्लब बाकी कुछ नहीं है ओके तो पर्सनल असिस्टेंट कुकिंग रेसिपी तो नहीं है ओके तो इस पे पेन किलर है एनीथिंग एल्स हाइडिंग समथिंग तो नहीं हो सकता ना ही इज इल इसकी वजह से वो बॉडी के ऊपर लेके बैठा है ताकि उसे ठंडी ना लगे या सर्दी ना लगे यस अगर लॉर्ड है तो ऑब्वियसली बात है तो दोनों की पोर्ट्रेट रेडी है और देखते हैं आगे डिस्कशन की तरफ I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient.
Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts, assistance? I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. तो अब हम आ चुके हैं लॉर्ड मार्श के घर पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम बात कर रहे थे लॉर्ड मार्श से, तो पता चला है कि वो उन्हें कुछ बीमारी है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी के लिए कुछ भी नहीं है, बट यस वी कैन सी। वो पिल्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, पेन किलर, मतलब पेन किलर पिल्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा पावर वाले। और उनका जो फिजिशियन है, फिशर नाम है उसका, वो भी कुछ ठीक से बता नहीं रहा है कि क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते बाकी के चीज़ें। Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Dear Lord Marsh, here is a list of selected participants for the special education program in October. It looks to be very promising event. I am looking forward to it. Williams, okay. Underline, John, yes. इसको करते हैं. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. Right. और क्या है? Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ तो पता चल रही है कि दोनों भी कुछ जो चीज़ छुपा रहे हैं, क्योंकि जो फिशर है वो भी लिस्ट देने से मना कर रहा है। जब वॉटसन था, डॉक्टर वॉटसन है इसके साथ, होम्स के साथ, उन्होंने जब पूछा कि क्या बीमारी है और क्या वो असिस्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो दैट मीन्स कुछ तो पकड़ा है जो चीज़ हमें जाके
देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में जाके। ओके, तो फिर से टॉम के घर पे जाना है, एक्सप्लोर करना है वहाँ पे और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉम के घर पे। हेलो टॉम। Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. तो कुछ बॉक्स मिला है टॉम को, देखते हैं उसमें अंदर क्या है। A ramrod to clean a rifle. Wolf Jack. Looks like a military badge. This oil can also be used on weapons. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. ओके, गर्मी है कहीं पे और यहाँ पे कुछ है। This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. तो टोबी होम्स के डॉगी का नाम है, तो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा घर पे। तो चलते हैं। ओके, और जो एक चीज़ मिली, जो कुछ भी अभी मिला है वो बॉक्स के अंदर से, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। Holmes, we need to help poor Tom. बैज, तो बैजेस इसमें तो है नहीं कुछ। यस, बैजेस और मेडल्स। क्या वुल्फ, या यही है। इज अ हाफ वुल्फ एंड हाफ jackrabbit. It was used by Scout as a self nickname. Lovett Scout formally became the British Army first marksman unit. Okay, Here it is. तो लेते हैं। इसके पहले ये भी दिखा रहा है, एक बार ये करके ट्राई करते हैं अगर कुछ हम। सेल्फ एजुकेशन प्रोग्राम मिसिंग। एक बार सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कर लेंगे। Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Come on, boy. Let's go. Oh. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. No issues. You can. हम वापस चलते हैं। चलो। तो जाके टोबी फिर स्निफ करेगा या स्मेल करेगा वो सारी चीज़ें, या फिर वो गन जहाँ पे रखी गई है तो उसके बारे में जानकारी देगा। तो चलिए चलते हैं। Search, Toby. Search. तो चलिए, अब हम टोबी है। Good. Toby can open doors. तो ये जो पाथ दिया गया है उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
तो टॉम के घर के अंदर जो बॉक्स मिला था, उस बॉक्स के अंदर जो की मिली थी, उसे ये क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड Pile of rubbish. जो कुछ भी है वो चीज़ खुल चुकी है। और अब यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ें देखने के लिए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है हमें। ओके, तो यहाँ पे टॉम की Tom's तस्वीर। photograph. Let's try to get inside. A map of Epping Forest. This case must have been full of cartridges. Dear George, I do understand you that a sad Sam as finding a job, not even small things, the children are not in return. तो ये जॉर्ज का फ्रेंड जैक है, तो उसने उसके लिए एक लेटर लिखा है। ओके, ये वाला चेक कर लेते हैं। दिस इज़ फ्रॉम रॉयल मैजेस्टी क्वीन विक्टोरिया, ओके, ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और उसने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड फॉर दिस वैलेंट मिलिट्री सर्विस ब्रिटिश आर्मी हियर बाय अवॉर्ड्स हिम द डिस्टिंग्विश्ड कंडक्ट मेडल एंड रिटायर्स हिम ड्यू टू द इंजरीज। ओके, इंजरीज की वजह से उसको रिटायरमेंट मिली है। और यहाँ पे कुछ There है। was something on the stand. Okay. Oh, nice. There was a rifle here. George Hurst took it with him. ओके, तो बाकी के सारी चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे। News clippings on Lords in the education program. Why are they here? तो टॉम के डैड के पास ये सारे न्यूज़ क्लिपिंग्स क्यों है? Dear Tom, if you are reading this letter, then it means that I am dead. Oh, your lovely father. तो जॉर्ज ने ये चिट्ठी टॉम के लिए लिखी है, बट उसने पोस्ट नहीं की है। That means he's alive. Obviously बात। Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें हमने This man पहले देखा appears था। in both documents. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. तो ये डॉक्यूमेंट मिला यहाँ पे जिस पे कुछ लोगों का नाम है, तो वो लोगों का नाम, वो जो लिस्ट हमें स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम पे जो यूज़र्स या फिर कुछ पीपल जो सिलेक्ट हुए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी वहाँ पे। तो वो नेम्स और यहाँ पे जो लिस्ट थी उसमें नेम्स मैच कर रहे हैं, और उसमें का एक पर्सन जॉन स्ट्रॉबेरिज वो मिसिंग है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये दोनों कड़ियाँ मिलती है। मेंशन जॉर्ज एंड ओके, ये ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों भी कनेक्टेड ही है, दोनों भी प्रोग्राम जो है वो कनेक्टेड है। ओके, रिफंड, फेयरवेल, मिसिंग, preparations refused. Preparations.
Yes, obvious. तो जो लेटर लिखा था तो जॉर्ज wrote a farewell letter but he didn't give it to Tom. That means yes, he's still alive. Her special job, club preparations. Okay. Special job is undoubtedly associated with violence. Yes, obvious है जिसकी वजह से उसने वो गन साथ में लेके चला गया है. Okay. George Hurst has belonged to the Lubet Scout. Okay, Marks Unit. Okay, बाकी कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी. तो अभी फिर से जाते हैं sneak into Lord Marsh and find out more information about the special education program. Okay, चलते हैं फिर लॉर्ड मार्श के घर पे. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Whatsoever. Do what you want to. तो घर के अंदर जाना है. दैट मीन्स बैक डोर से या फिर ये डोर में से तो नहीं जाने मिलेगा अभी से बात. तो चलिए पीछे से देखते हैं अगर कुछ वे है अंदर जाने का. The window is firmly shut. ओके, नो इश्यूज. डोर से जा सकते हैं, बैक डोर से. एक बार कर लो तो नेक्स्ट टाइम आसानी हो जाती है ना करने में. तो यहाँ से अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे घर. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Uh-oh. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. तो वॉटसन ने अपना काम कर दिया. अब हमें देखना है फटाफट क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. Today special education program have saved one of the over 200 individuals from gutter and evaluated them to help from the supporting a critical foundation of the proposed empire. The largest thanks to wisdom of the forest of Lord Marshall, who is the most progressive and wise politician. Okay, he has cried a great deal of work in the field while ignoring the critics and any influence from any arrogant colleague who are steering the way. Okay, तो ये कुछ किसी ने लेटर लिखा है. Dear Lord Marsh, thanks for special education program. My life has been changed completely. I don't know how to thank you. किसी ने थैंक यू लेटर भी लिखा है और देखते हैं और क्या है. Oh Lord Collins, Lord Marsh. Okay, Marsh ने Collins के लिए कुछ लेटर. It is clear to me that we could learn a great many things about running the empire from those who we trample underfoot, and these people who we live prostituted and starving in the shadows of our city at home. तो ये लेटर से पता चल जाता है कि Lord Marsh is not a good person.
Lord Marsh is a keen hunter. Okay. Okay. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Okay, तो वो यहाँ पे आ रहा है. That means हमें छुपना है कहीं पे. यहाँ पे छुप जाता है. But वो फ्रेम तो वहीं पे थी ना, नीचे निकाल के रखी हुई. Mr. Holmes? What are you doing here? Uh-oh. Will you break anything else? I'll try my best. ठीक है. मैं तो चुपके ही बैठा था ना. पता नहीं, लेट हो गया शायद से. बट अभी भी वो चीज़ वहीं पे है. बट उसको इतना गुस्सा है कि डॉक्टर वाटसन आके चेक कर रहे थे, तो उसका ध्यान नहीं गया. अच्छी बात. ओके. Got it. Nice. चलिए खोल के देखते हैं अंदर क्या है. कुछ लेटर है लॉर्ड हैरिंगटन की तरफ से. सो आई सो एडमायर ऑल ऑफ दिस. They seems to be very bright and have fresh air. Communicating with them is such a pleasure, and they are smart, not like us. Perhaps it is they so should have been lords. And obviously बात है ना, ये जो लॉर्ड रहते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वही काम करते हैं. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Okay. I have attached a map to the letter found on the list. तो कुछ मैप है जिसको भी जाके चेक करना पड़ेगा. इसके लिए एक बार देख लेते हैं. स्किलफुल, यस, वो हंटर्स है. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You're going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. तो होम्स ने सारे कुछ वहाँ से चीज़ें जो कुछ भी चाहिए थी, जो कुछ भी
तो होम्स ने वहाँ पे जाके जो कुछ भी एविडेंसेस चाहिए थे वो कलेक्ट कर लिए हैं, और ऑल्सो साथ में वैटसन भी थे तो उन्होंने भी कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं वैटसन से या Holmes, yes. come here. This is serious. वैटसन से बात करनी पड़ेगी। Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. Let us apply chemicals to color the sample. ओके तो पिपेट लगेगा इसके लिए। ओके तो विच केमिकल, तीनों या चलो एक एक करके ट्राई करते हैं तो पता चल जाएगा। ये था फर्स्ट वन, उसके बाद है एसिड, अल्कोहल, उसके बाद है मिथिलिन ब्लू, Now, let's examine the colored sample under the microscope. ओके नो प्रॉब्लम। Oh. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. सीधी बात है ना, अगर इन्फेक्ट हो गया तो घर पे छोटी बच्ची भी है, वो भी इन्फेक्ट हो सकती है। Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. ओके तो डॉक्टर वाटसन ने जो हैंकी उठाया था वहाँ से लॉर्ड मार्श की तरफ से, तो वो हैंकी को डायग्नोस करने के बाद पता चला है कि उन्हें कुछ डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर जान ले सकती है, और उन्होंने गाइड किया है कि उनसे दूरी रहे, जैसे वो इन्हें ना हो जाए, क्योंकि घर में एक छोटी बच्ची भी है। तो जो हमें एक मैप मिला था, उस मैप को ट्राई करते हैं। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बॉटनी, ओक, राइट। It's a strange and mysterious tree that grows in epic forest. So epic forest में grow करने वाला एक पेड़ का नाम है। Some people say that over centuries witches performed their ceremonies near this tree. This rich have assured that whoever may touch the trunk of will be cursed or whatever. ऐसा कुछ नहीं होगा। Here it is. तो एक झाड़ है। Aston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Yes, right. तो हमारे पास मैप है, तो एक बार मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे है।
Let's try to find the place from that. I got to know. Sorry for interrupting. Okay, ये रहा यहाँ पे. Right. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. अब क्या बोल सकते हो? कुछ भी. इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है ना हमें, तो क्या हो सकता है? शॉक. चलो. Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. झूठे. Okay. Map invitation. George knew about the meeting between Lord Marsh and his companion. It took place in Epping Forest. Okay. Lord Marsh and the companion entered the forest with an incident on George has mapped to hold a meeting. Okay. To go to Epping Forest. तो जाना है Epping Forest में, तो चलिए उधर चलते हैं. अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बात बताना चाहूँगा कि गेम जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होते ही वो इपिंग फॉरेस्ट में ही स्टार्ट हुआ था. तो वहाँ पे हम दौड़ रहे थे और उसके बाद वो किसी ने बुलेट चलाई तो बुलेट लगी या पता नहीं, और उसके बाद गेम स्टार्ट हुआ था 48 आवर्स अर्लियर करके. तो शायद से वहीं पे जाना है और गेम का या फिर ये जो एपिसोड है उसका एंड भी वहीं पे होगा. चलिए देखते हैं क्या होता है आगे. Let's see how long you can stay alive! This man was killed recently. The body is still warm. He was poor. Find him, boys! Find him! You scampering little rat!
He was killed by a shot to the forehead. My God, it's Lord Harrington's body. My health is deteriorating. I need to dress my wound. तो हम आ चुके हैं इपिक फॉरेस्ट में, और जैसे मैंने बताया था कि हम पहले भी यहीं पे आ चुके थे और उसके बाद हम दौड़ रहे थे कहीं पे। तो वो ये था कि वो कोई तो हमें चेस कर रहा है। अब वो कौन है वो पता नहीं, अब वो जॉर्ज है या फिर और कोई है उसके बारे में पता चलेगा। बट इस गेम में ना उन्होंने कोई गन दी है हमारे हाथ में, ना कुछ बाकी की चीज़ें हैं, बस दौड़ना है। और कुछ नहीं कर सकते, तो जान बचा के दौड़ ही रहे। यहाँ तक तो पहुँचे ही है और यहाँ पे एक घर मिला है। तो अभी कुछ फाइंड आउट करते हैं जो यूज़ हो, क्योंकि हमारा हीरो पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. ओके, तो ये लॉर्ड मार्शल्स का ही केबिन है। Someone's coming, I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging you festering wretch. Prepare to meet your maker. तो यहाँ पे हमें जॉर्ज मिला जो लापता था। देखते हैं आगे, बता सकूंगा आगे जाके। रिवेंज ऑब्वियसली, लॉर्ड मार्शल। तो लॉर्ड मार्श सब जो आदमियों को लेके जा रहे थे स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से, तो उन्हें वो जंगल में ले जाके मार रहे थे, हंट कर रहे थे उनके साथ। मतलब उनको जंगल में छोड़ के मज़े ले रहे थे कि उनके बाकी के कंपेनियंस शूट करेंगे और वो जो बाकी के लोग हैं जो सिलेक्टेड थे वो दौड़ेंगे। तो ऐसे वो सारे गायब हुए थे। तो यस, लॉर्ड मार्शल इज गिल्टी एंड ही मस्ट बी पुट डाउन टू जेल। George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than your eye could deliver.
His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. इसने भी तो एक मारा है. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. एक बार कंक्लूजन चेक कर लेते हैं क्या कि यस 76% made the same moral choices. ठीक है फिर तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला एपिसोड या पहला केस बोल सकते हैं. तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो. अगर ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. हमारा चैनल या हमारे फैमिली को बढ़ाने के लिए वीडियोस को शेयर ज़रूर करना. और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी फिट, टेक केयर और वंदे मातरम.